So managing alumni relations is what we have to look into, right? To begin with, let us ponder which is the most difficult of all the jobs. Being the head of the department, yes, it is a challenging job, one of the challenging administrative jobs, because you have to manage many students, you have to manage many faculty members, supporting staff and all. But when you become the principal of the college, the job is multiplied that many more times. You have many more departments and so many more faculty members, so many more students, supporting staff to look after. Being the provost of the halls of residence, students' hall of residence has an altogether a different dimension. The same set of students who are so very obedient to you in your classroom, when you go to their halls of residence, they are in their backyard and they will treat you in a very, very different way. And then all these students are full of energy. So you never know which part of the day, which part of the night they'll create some problem and you will have to rush to them. So it becomes a 24/7 job if you are the provost or the warden of the Students' Hall of Residence. Now, being the Dean of Alumni Affairs, hello? मैं एक लेक्चर में हूँ 12:30 के बाद बात कर पाऊंगा जी. Now, being the Dean of Alumni Affairs has all these three problems combined together. Because many alumni may be heads of the departments themselves, they may be the principals themselves. And then when it comes to the alma mater, these students, these alumni will behave as childish as a student. Because talking of the alma mater, there is a spark in their eyes and they become very, very young. So Dean of Alumni Affairs becomes the most challenging job. And on the lighter side, maybe a little more challenging job will be engaging a class of teachers like what I'm doing just now. Because teaching the teachers is a very difficult job. You're all very good teachers, so I'm sure. And that is what we also used to do when we were young. And anybody came to teach us, we used to judge him or her as per our teaching capabilities, whether he is teaching better than me or not. All right, at least equal to what I am teaching. So maybe engaging a class like this may be more challenging. Anyway, let's get along. So as I was saying, Dean of Alumni Affairs, you have to manage students of all ages. They may be managing directors, they may be entrepreneurs, but in the case of the alma mater, they will become students. So you have to manage students of all ages, the freshly graduated ones to somebody who graduated 50 years ago or 60 years ago. And it is more challenging than adult education even. Because in adult education, they at least have some certificate or diploma or a degree to pass. Whereas in the case of these alumni, they are students who do not have to pass. They already have the degree with them. So how to manage them? So this turns out to be most demanding job and also the most thankless job. Because all the bad things will come to you. If you're doing managing alumni relations, they'll have all kinds of complaints against you. And all the good things, if there are any, all the good things will go to the Vice Chancellor. So you don't get credit of all the good work that you keep doing. So in that sense, being the Dean of Alumni Affairs is the most challenging and demanding job. Before we proceed any further, we have to learn the nuances of the terminology. The word alumni, that is the male plural. Alumnus is the male singular. Alumni is female plural. And alumna is female singular. Why I'm saying this? Because if you are heading the Alumni Affairs Committee and you don't use these words properly, the alumni or the alumni or the alumna, the alumnus will mind it too much. They will say you are heading us, but still you are not using the proper word. अब किसी alumna को अगर आपने alumnus कह दिया, तो gender sensitive issue बन जाता है. So we have to be very cautious with these words. While writing, we have to resort to gender neutral term. We have to write alumni / alumni so that they don't mind it that much.
और ये तो खैर इंग्लिश ग्रामर की बात है या किसी भी लैंग्वेज की बात है, वन ऑफ दी जब यूज करते हैं, वन ऑफ दी, देन यू यूज दी प्लूरल, यू डोंट यूज सिंगुलर वन ऑफ दी के साथ. So one of the distinguished alumnus or alumna will be wrong. Instead, we should use one of the distinguished alumni or alumni. तो इसको याद रखिए, alumni is male plural, alumnus is male singular, alumni is female plural, and alumna is female singular. हम लोग कभी कभी मिक्सअप कर देते हैं, उसमें ज़रा सेंसिटिव इशू बन जाता है. Who are the stakeholders of an academic institution? Obviously, students are the most important stakeholders. Without students, the academic institution may not exist at all. It is running because of the students. Then next are the faculty members who are running the show there. Supporting staff, technical, non-teaching, all of them included. Parents are very important stakeholder because they are paying the fees. So they are basically the financial contributors. So they are an important stakeholder. Then employers, professional bodies, industry, they're all stakeholders of an academic institution. Employers are going to employ the graduates, so they are the stakeholder. Professional bodies, because they have to set the guidelines and they have to see to it that those guidelines are adhered to. Then industry, ये बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये कि इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री का जो इंटरेक्शन है दैट इज वीक. इफ यू गो टू द वेस्ट, this institute industry interaction is working very well. जो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स हैं वो इंस्टीट्यूट में आती हैं, उन पे काम होता है, then they are sent back to the industry. The industry looks up to the institution for the solutions. The institute looks up to the industry for the problems, for the live problems, live projects. और फंडिंग आती है इंडस्ट्री से इंस्टीट्यूट्स में. So that's a very befitting interaction between them. Something which is lacking in the third world countries. हम लोग अभी उतना ये गैप को ब्रिज नहीं कर पाए. For example, if you look at the Silicon Valley, it is because Stanford University in California, Berkeley, they are continuously feeding the Silicon Valley. If you look at the history of Google search engine, these were the two computer science graduates, Larry Page and Sergey Brin, who had come up with a very good algorithm, and they came to know that their supervisor is being visited by a top-notch industrialist. So they were waiting outside the office of their supervisor with their laptops ready in their hands. So when that industrialist came out, by the time he walked to the parking lot and got into his car, he was convinced by these two students about the applicability of their algorithm. And when he went into his car, he sat down in his car, he pulled out his checkbook, wrote a check for $100,000, wrote pay Google Inc., signed it and drove away. Brin and Page, they write in their biography that for full 2 weeks, that check was just sitting in our drawers. We didn't know what to do with that check. After 2 weeks, we decided to open a company with the name Google. Only then that check was cashed, and we started a Linux cluster, crawled the web, started web searching, and now they boast of one of the most successful companies with the largest Linux cluster and all. And some very innovative things they have done. जो वहाँ के employees हैं, most of them they write on their home page, don't offer us a job, we have got the best job in the world. They've done some very innovative things. बाकी companies में 5 days a week है. Google says we have 4 days a week. You come on the 5th day and you work whatever you feel like. जो आपका interest हो उसको pursue कीजिए. From their 5th day work, they have come up with some very good tools. Google ने शर्त लगाई हुई है कि 5वें दिन का जो आपका काम होगा उस पर राइट हमारा है, because we're paying you for that 5th day also. So some very useful Google tools have come out from that 5th day work. ऐसी Google कैंपस पे खाना फ्री है, स्पोर्ट्स आप जो खेलना चाहें, इवन दे हैव स्लीपिंग रूम्स, और लॉन्ड्री आप वहाँ फ्री में करा लीजिए, कार सर्विस करा लीजिए, बेबी सिटिंग है. क्यों है? So that you don't have to spend time in washing clothes or servicing your car. आप आइए उनके पास, आप उनके लिए काम कीजिए, वो आपका काम करके दे देंगे. So obviously you will be carrying out more valuable work than what they will give you in return. So
lot of innovating things they have done. You talk about Tesla car company, सारी जो बड़ी बड़ी कार की कंपनीज हैं वो मिशिगन में है, बट टेस्ला कार कंपनी जैसे क्राइसलर हुई, फोर्ड हुई, है ना, शेवरले, दे आर ऑल इन मिशिगन. लेकिन टेस्ला कार प्लांट इज इन सिलिकॉन वैली. व्हाई? बिकॉज टेस्ला इज मोर अ कंप्यूटर देन अ कार. कार के हिसाब से तो उसमें कुछ है ही नहीं, एक बैटरी है, एक मोटर है, ना कंबस्शन इंजन है, ना गियर्स हैं, कुछ भी नहीं है. तो इट इज मोर अ कंप्यूटर विच हैज गॉट मशीन लर्निंग, सेल्फ ड्रिवन कार्स. हमारे एक फ्रेंड है, उन्होंने टेस्ला कार थी उनके पास. whenever they used to put that car in a self driven mode, at a T point the car used to swerve a little bit. So once he drove through that T point, the next time the car had learned, next time the car ने वो T turn को negotiate किया तो swerve नहीं किया. So it is more of a machine learning computer rather than a car by itself. अच्छा, टेस्ला में क्या खास बात है? दैट इज ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल कंपनी. दे आर ऑल्सो वेरी इनोवेटिव. द इंटायर प्लांट इज इन डार्क. कोई उसमें विजिबल लाइट नहीं, बिकॉज ऑल द रोबोट्स आर वर्किंग. यू डोंट हैव ह्यूमन बीइंग्स. दे रिक्वायर द विजिबल लाइट. तो दे आर डूइंग लॉट ऑफ एनर्जी सेविंग. विजिबल लाइट लगाने की जरूरत ही नहीं है. एंड दे आर ऑल्सो सेविंग लॉट ऑफ स्पेस बिकॉज दे हैव डन इंच टू इंच पैकिंग. क्योंकि रोबोट्स का पाथ इज प्रीटी वेल डिफाइंड. With human beings, you need to give extra space. Somebody might be obese, somebody might be slim, somebody might be walking with his hands thrown out and all. लेकिन robots के साथ आपको पता है इसका क्या path होगा, आप inch to inch packing कर दिए. So they are saving on space, they are saving on energy by keeping the entire plant in dark. They are also working round the clock because robots, they don't have to go home. So 24/7, no holidays, no Sundays, no Saturdays. The production goes on. तो ये सारे सक्सेसफुल वेंचर्स इसलिए हुए क्योंकि इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरैक्शन वहां पर स्ट्रांग है. द नेक्स्ट, मैनेजमेंट, द गवर्नमेंट, द सोसाइटी, एवरीबॉडी इज अ स्टेक होल्डर. आप ये मत सोचिए कि अगर फाइनेंशियल एड नहीं मिल रही है गवर्नमेंट से तो द गवर्नमेंट डजंट हैव एनी स्टेक इन एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन. नो, इवन फॉर अ सेल्फ फंडेड इंस्टीट्यूट द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड द अप्रूवल, द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग एक्रीडिटेशन, द गवर्नमेंट इज, अगर यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो वो लॉ पास कर रही है गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट इज अ स्टेक होल्डर इन एवरी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन. इन दिस लिस्ट, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर द alumni or the alumni. They are, if not the important stakeholder, they are one of the important stakeholders of an academic institutions. In next few slides, we will see how can alumni contribute. I'm talking with an experience, a rich experience with which I have had from the alumni of the Aligarh Muslim University. We have a rich legacy of our alumni. Our founder was Sir Syed Ahmad Khan, and we are proud of our cultures and traditions. हमारे हमेशा एक issue of seniority होता है. Whenever two alumni they meet, they start boasting of one's seniority over the other. So these two alumni they met. तो एक ने दूसरे से कहा भाई मैं तो आपसे सीनियर हूँ. तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो अपने सीनियर का नाम लिया. अच्छा, आप उनके बैच के होंगे? तो कहा नहीं नहीं, मैं तो और सीनियर हूँ. उन्होंने एक और सीनियर का नाम लिया. अच्छा, आप उनके बैच के होंगे? उनका नहीं नहीं, मैं तो और सीनियर हूँ. तो उन्होंने एक सुपर सीनियर का नाम लिया. अच्छा, आप उनके बैच के होंगे? अब ये फिर बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो उनसे भी सीनियर हूँ. सो दिस गाय गॉट इरिटेटेड. ही सेड, अरे तो क्या आप सर सैयद अहमद खान से भी सीनियर हैं क्या? The very founder, Sir Syed Ahmad Khan, are you senior than him even? So these are, the softer sides of the rich culture and legacy that we enjoy at the Aligarh Muslim University. We have proudly produced two Bharat Ratnas from our university, Khan Abdul Ghaffar Khan and Dr. Zakir Hussain. Khan Abdul Ghaffar Khan was more popularly known as Frontier Gandhi, and Dr. Zakir Hussain, who later became the President of India. Both of them were our alumni. We have produced 8 Padma Vibhushans, 27 Padma Bhushans, and around 50 Padma Shri awardees. All these national level awardees, their brief life sketch has been captured by one of our alumni, Dr. Samina Salim, who is based in Houston. उन्होंने इन सब के लाइफ स्केचेस को कैप्चर किया हुआ है.
So this is the list of Bharat Ratnas and other awardees from our university. Padma Bhushan, Padma Shris. Besides that, we have many Janpreet awardees, Sahitya Academy awardees. We have produced an Olympic gold medalist from our university, Dr. Zafar Iqbal. He has graduated in civil engineering. So he is our product. So we have proudly produced an Olympic gold medalist from our university. We have given quite a few heads of states and governments. His Excellency Amin Hilmi Didi, President of Maldives, was our alumnus. His Excellency Liaquat Ali Khan, Prime Minister of Pakistan and Finance Minister in the interim government headed by Pandit Jawaharlal Nehru. His Excellency Mansoor Ali, Prime Minister, the People's Republic of Bangladesh. His Excellency Muhammad Hamidullah Khan, ruler of princely state of Bhopal, Chancellor Chamber of Indian Commerce, Indian Princes. His Excellency Dr. Zakir Hussain, who became the President of Indian Republic. They were all our alumni. The First Lady of the country, Mrs. Abida Ahmed, wife of Sharif Fakhruddin Ali Ahmed, President of Indian Republic, she was our alumna. So we have a rich legacy of alumni with us. Now the question is, why alumni? Why should alumni come forward? Why are we paying so much emphasis to the alumni? Firstly, they are the greatest test to the strength of the college's program. जितना स्ट्रॉन्ग बेस एलुमनाई का होगा उतना स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटी होगी, और जितनी स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटी होगी उतना स्ट्रॉन्ग एलुमनाई बेस होगा. So they are a mutually reinforcing relationship. Alumni have an emotional attachment to the college because they have spent their prime years in the institution, in the college, in the university. So they have that emotional attachment. They have the experience of industry and outside world. एक एंड पर वो हमारे यहाँ से पढ़े, दूसरे एंड पर अब इंडस्ट्री में. So they can very easily help us in bridging the gap between the institute that they have studied from and the industry they work for. They have a better understanding of the college or the institution's needs and requirements because they have studied here. They have lived the life here. They have the ability to act as a bridge between institute and industry, as just now I said. Every great university has a strong, well-connected alumni network. कोई यूनिवर्सिटी बड़ी बनी नहीं सकती जब तक कि उनके alumni base strong ना हो. Why should they come forward? Alumni क्यों मदद करें? क्यों alma mater को help करें? पहला तो देखिए शौक होता है tracing of old friends and fellow alumni. हमारा वो क्लास फेलो कहाँ है, वो क्लास फेलो कहाँ है. They want to know and get in touch with them. Also to replicate the support which was provided to them when they were students. All the supports that they got from the alumni in their times, they want to pay it back to the current crop of students. By helping the institution become bigger, stronger, and more successful, alumni are also enhancing the value of their own degree qualification. आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ के alumni बड़ी जगह पर पहुंचेगा तो alumni की वजह से उस यूनिवर्सिटी का नाम और यूनिवर्सिटी की वजह से उस alumni का नाम. So in that sense, AMU is not just an institution, it is a mission. Mission vision का फर्क हमने पिछले लेक्चर में सीखा था outcome based education में. So every university, including the Aligarh Muslim University, is a mission statement towards the larger vision of the country. कंट्री का विजन है और सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को उसमें मिशन बनकर उस विजन को अचीव करने के लिए दे हैव टू जॉइन हैंड्स. व्हाट मेक्स अ कॉलेज बेटर? द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट द क्यूरिकुलम. यस, क्यूरिकुलम हैज टू बी गुड. लेकिन उस क्यूरिकुलम को पढ़ने के लिए वैसे स्टूडेंट्स भी चाहिए, उसको पढ़ाने के लिए वैसे फैकल्टी मेंबर्स चाहिए. दीज फैकल्टी मेंबर्स शुड कैरी आउट गुड रिसर्च. That research requires good infrastructure, and from that only that good infrastructure can afford to have a good curriculum. तो ये wheel है, college development का wheel है. The centerpiece or the axle of this wheel is the alumni. They are the alumni. Alumni can help us in designing a latest industry compliant curriculum. They can get us in getting, they can help us in getting good students. We'll discuss shortly how.
Many of them will become faculty members themselves, or they can help us in getting good faculty members and retaining them. They can help us in so many ways in carrying out research. कुछ slides में हम देखेंगे how can they help us in research. They can help us in the infrastructure development. बिल्डिंग दे सकते हैं, फर्नीचर दे सकते हैं, टीचिंग एड्स दे सकते हैं, लाइब्रेरी सेटअप कर सकते हैं, लैब इक्विपमेंट दे सकते हैं. हम डिस्कस करेंगे इसको आगे. So you see, the alumni are helping in each and every cog of this development wheel of any institution. They are the centerpiece. What can be the role of alumni and alumni? देखिए, first and the foremost, building the reputation of the college or the institution, the perception. क्योंकि perception सिर्फ ranking में ही काम नहीं आता है. Perception gets you better students. Good perception gets you better faculty members. So building the reputation and the perception of the college is very important. The problem is that a university, a big university like AMU, has always been at the receiving end from the media. Many small incidents of the university are blown out of proportion. और यूनिवर्सिटीज के साथ भी ये प्रॉब्लम. बड़ी यूनिवर्सिटी कहीं एक कोने में कुछ थोड़ा सा हो गया, मीडिया उसको हाईलाइट करता है बिकॉज दे गेट माइलेज आउट ऑफ इट. It creates a very bad illusion. This may be for political purpose, for non-political purpose, for any individual's interests. So it creates a very bad illusion and reputation in public opinion, which needs to be countered for the sake of truth and correctness. कोई exaggeration नहीं चाहिए. If just the truth and correctness prevails, the institution will be happy. Moreover, geographically, the location of the Aligarh isn't very good in terms of reach. अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, भाई geographical location should not be important because if an institution is good, it can be located anywhere. I may not agree with you completely because I've had the experience of two premier institutes, namely IIT Kanpur and IIT Delhi. I did my master's from IIT Kanpur, PhD from IIT Delhi. Both are very premier institutes. IIT Kanpur has the geographical disadvantage. Even though IIT Kanpur is academically superior, आप इस जेई का रिजल्ट उठाकर देखिए, better students, better ranked students, they go to IIT Kanpur. They opt for IIT Kanpur ahead. फैकल्टी बहुत अच्छी है, बहुत फोकस्ड है, रिसर्च वर्क बहुत अच्छा है, लेकिन IIT दिल्ली enjoys better rankings. बहुत सारी कंपनीज ने अपने रिसर्च सेंटर्स IIT दिल्ली में खोले हुए हैं बिकॉज इट इज इजी इन टर्म्स ऑफ रीच. IIT कानपुर जाने के लिए तो एक बार दिल्ली तो आना ही है, दिल्ली से आगे फिर एक फ्लाइट लखनऊ की लो, लखनऊ से फिर ड्राइव करो कानपुर. Why take extra pain when you have an IIT in Delhi itself? So IBM Solutions Research Center is situated in Delhi IIT campus. Bharati School of Telecom is situated in IIT Delhi campus. So even though IIT Kanpur might have an edge in terms of academics, but IIT Delhi enjoys better ranking, better reachability, better exposure. So geographical location ka definitely there is an impact of it. इसी तरह Aligarh Muslim University enjoys such a high ranking and autonomy and all. But when compared to the sister universities in the national capital region, because of the reachability issue, AMU may not figure up there, right? Effect क्या होता है? The companies become uninterested in our students, either because of the bad reputation or because of their geographical disadvantage. We receive undervalued ratings and rankings, and many good students may opt for other colleges or universities. उनको लगेगा कि भाई दिल्ली में रख लो. ऐसी कंपनीज भी वो कहेंगे भाई दिल्ली में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं, वहीं से रिक्रूट कर लो, वाई गो डाउन टू AMU. थोड़ा सा उसका इफेक्ट आता है इस प्रॉब्लम का. हाउ कैन द एलुमनाई हेल्प अस? 12:30 के बाद क्लास ले रहे हैं. Alumni are the international ambassadors of their universities. They take the knowledge of institute to their hometowns and countries and into their professional and social networks. आप लोगों ने देखा होगा ऑटो रिक्शा के पीछे, टैक्सी के पीछे लोग एडवर्टाइजमेंट्स लगवाते हैं. क्यों? If you put a big hoarding in one place, that is stationary. Whosoever drives by will only be able to see that. Or if you put it at the back of the
auto rickshaw or taxi that keeps moving around and goes to all the locations. In much the same way, our alumni, they are the walking ambassadors. They are the walking advertisements for us at the national level as well as at the international levels. And they do the advertisement in their hometowns. कभी नेटिव प्लेस विजिट करेंगे, वहां सबसे कहेंगे भाई अपने बच्चों को पढ़ने भेजो ना, एएमयू से देखो हम पढ़े, हम कितनी अच्छी जगह पहुंच गए, तुम भी भेजो पढ़ने. ऐसे ही countries that they live in, they may talk high about us there. In their professional networks, कभी बात होगी तो they can always assert, I'm doing well in this company because I'm a product of such and such institution. ऐसे social networks में वो help करेंगे. Many good students will come that way. Alumni can use their position and stature in building the reputation of the college and university. ठीक है, जितना वो हेल्प कर रहे होंगे उतना इंस्टीट्यूशन उनको हेल्प कर रहा होगा. So mutually reinforcing relationship they enjoy. Alumni generate invaluable word of mouth marketing, है ना? And this becomes a third party marketing kind of thing. वरना हम खुद कहेंगे तो लोग कहेंगे self praise is no praise. When the alumni talk, they have the connect with the alma mater, all right, but then they are also having the experience of the industry. So their marketing is taken more seriously in their social and professional networks. Alumni can bring more companies for recruitment by convincing them through their positions. अब HR अपने यहाँ HR में बात कर सकते हैं. I am the managing director. I have rose from the ranks of the university. So why don't you visit my university and recruit more students from there? They can always assert by the status that they enjoy. पहला तो हुआ building the reputation. दूसरा helping in research. We all know that research outputs contribute a lot to the ranking of any institution or the university. So the quantity and quality of research can be increased by aiding the institute with the state-of-the-art modern lab equipment. It happened with us. One of our 1987 graduates, Tahir Madraswala, who has a big company in the Silicon Valley, Open Silicon, a 500-strong company. They contacted us. They said that we want to set up a VLSI design center at the Aligarh Muslim University. We said, welcome. So they said that even if we give you the retired workstations, they will be good enough for you. और जैसे iPhone 15 आ गया तो iPhone 14 कोई फेक थोड़ी दिया जाएगा. iPhone 14 also is very good for many people. तो उन्होंने हमें अपने retired workstations दिए. Software companies से बात की that look, we buy softwares worth millions of dollars every year from you. Why don't you offer an academic version of the software to my alma mater? So they set up a VLSI design center, a very sophisticated lab, industry-sponsored lab they set up for us. Alumni can contribute by sponsoring the research work of students. A positive environment can thus be created. अब उनको सेटअप बनाना है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाना है, उसमें वो हेल्प कर सकते हैं. It will also help in building the reputation of the college because the research outputs have a direct impact on the reputation and ranking. The students can be assisted in their research work by technical assistance from esteemed personalities having good experience in research work. हमारे एक फॉर्मर वाइस चांसलर कहा करते थे कि एलुमनाई से हमें 3 T चाहिए. 3 T's we want. Their talent, their time and their treasure. Talent, टाइम और ट्रेजर, ये 3 T's हमको चाहिए एलुमनाई से. तो उनका टैलेंट ये है, they are experienced researchers themselves or they have the industry experience, so they can get us work on some live projects, some state-of-the-art problems we can work, and they can be the supervisors or the mentors in those research problems. They can help us in collaboration. देखिए कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. आपको याद होगा पीओ जब हम डिस्कस कर रहे थे आउटकम बेस्ड एजुकेशन में, तो इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, तो टीम वर्क पॉइंट्स टू कोलैबोरेशन ओनली. और स्कूल में मैथमेटिक्स में हमको जब वो उस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते थे कि 2 आदमी ये काम 5 दिन में करते हैं तो 4 आदमी ये काम कितने दिन में करेंगे, दैट वाज द फर्स्ट लेसन इन कोलैबोरेशन.
In fact, there is a lecture by me on forming and sustaining collaborations. YouTube पर कहीं पढ़ा होगा, वो सर्च करके आप लोग देखिएगा कि how important and how can we form successful collaborations. So a number of companies carry on their research work in collaboration with universities and colleges. देखिए collaboration में win-win situation है. इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम है वो यूनिवर्सिटी में आके सॉल्व हो जाएगी बहुत कम पैसों में. वी हैव सम 60 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, उनसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करवा लेंगे. इफ नॉट ऑल, मेनी ऑफ देम विल बी विलिंग टू. पैसा बहुत कम लगेगा, बिकॉज दोज स्टूडेंट्स, अगर आप उनको पैसा ना भी दें, सिर्फ सर्टिफिकेट दे दें कि फलानी इंडस्ट्री के लिए उन्होंने काम किया, दे विल बी हैप्पी. आप कुछ उनको नॉमिनल अमाउंट पे कर दें, दे विल बी हैप्पियर इवन. उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए if the company is employing professionals, they'll have to pay much more to them. तो यूनिवर्सिटी को एक अच्छी प्रॉब्लम मिल गई सॉल्व करने के लिए और सोल्यूशन इंडस्ट्री को मिल गया. So it's a win-win situation for both when the collaborations are formed. So alumni can use their position to have such collaborated work done with the students and faculties of the university. दोनों को यूज कर सकते हैं. फैकल्टीज हाईली क्वालिफाइड हैं, PhDs हैं, they can supervise. Alumni are often in the position to engage the expertise of the institution in their professional lives. जो भी उनको professional problems हैं, they can bring those problems to us and we can solve it for them. और उसकी वो फंडिंग हमको देंगे, कंसल्टेंसी देंगे. Alumni can help in signing of the MOUs between university and other institutes. Many alumni will be faculty members at other universities, so they can help us in signing MOUs. It happened with us. Arizona State University से alumni के through हमारा MOU sign हुआ. Ohio State University Columbus से हमारा MOU through alumni हुआ, sign हुआ. So that way many other MOUs. एक National Oceanography Center है Southampton, UK में. They came up to us, we want to set up a collaboration with you. They wanted to work on a transatlantic optical fiber laying. तो अब उसमें उनको कम्युनिकेशन इंजीनियर्स भी चाहिए, कंप्यूटर इंजीनियर्स चाहिए फॉर डेटा एनालिटिक्स, जियोलॉजी के लोग चाहिए, है ना, फिर जोलॉजी के लोग चाहिए हु आर स्टडीइंग द इंटरैक्शन ऑफ द मरीन लाइफ विद दैट ऑप्टिकल फाइबर. So we formed a big collaboration with them. So alumni can help us in signing those MOUs and setting up those collaborations and sustaining them. Fourth benefit from the alumni is just sharing their experience. देखिए, experience is something that you can't get from a book. It has to be earned the hard way. The alumni, they've gone through those hardships, so they can very easily share those experiences with our students. So our students can learn a lot from the experience and guidance of the alumni. Their deeper knowledge about the requirement of industries can definitely help students while choosing their research and project work. State of the art problems पे हमारे बच्चे काम कर सकेंगे. A guideline about what to do and what not to do. देखिए, what not to do is very important. हम what to do तो बता देते हैं, what not to do रह जाता है. This is also very important. The famous English cricketer Alec Stewart writes in his autobiography, I learned more from my defeats than from my victories. Very true. When we are victorious, we are overjoyed. We tend to overlook our shortcomings because we have won anyway. It is when we are defeated that we sit down with our heads bowed down, we do self-introspection. Where have I gone wrong? We try to improve upon it so that we can be the winner next time. So it always helps in seeing others stumble and then get cautious, rather than खुद ठोकर लगी, गिर गए, हाथ टूटा, पांव टूटा, दांत टूटे, घुटना छिला, फिर समझ में आई. It is better that we learn from others. So what not to do may illuminate them with a clear vision about their careers. Their experience can teach them a lot about how to achieve their goal with less difficulty. Efficiency कैसे बढ़ाई जाए. Achieving the goals is one part, but how to achieve it with less difficulty in a more efficient way. All that can come from just the experience of the alumni. फिर देखिए, mentoring बहुत important है. In a household, we have the parents and the younger children.
Elder siblings become the bridge between the parents and the younger children. Younger children, they're not able to say all the things to the parents. So younger siblings can communicate on behalf of them. So alumni, in that sense, are the elder siblings between teachers and administration on one end and the students on the other end. Teacher और student के बीच में there necessarily has to have a gap. नहीं होगा तो students will start taking undue advantage. मैडम इम्पोर्टेंट क्या है, सर एग्जाम में क्या पूछेंगे, सैम्पल क्वेश्चंस दे दीजिए, so on so on. So you have to maintain a gap. Alumni can help in bridging this gap. एक end पे they can be freely talking to the students, discussing their problems. On the other end, they can asserting on the teachers and the alumni that these are the problems the students are facing. Why don't you address them? है ना? So the establishment of a student alumni mentoring program can be one of the most effective roles of alumni. All top universities of the world have an excellent mentoring network. देखिए, फैकल्टी मेंबर्स हो, स्टूडेंट्स हो, और फिर ये alumni बेस हो जो बड़ा सा हो. ये स्टैटिक है फैकल्टी, ये स्टैटिक है स्टूडेंट्स. स्टैटिक इन द सेंस एक साल के लिए तो स्टैटिक है, नेक्स्ट ईयर इट माइट चेंज. फैकल्टी तो पूरा वर्किंग लाइफ में स्टैटिक है. एलुमनाई डायनेमिक है. डायनेमिक से मतलब ये कभी एक एलुमनाई होगा, दूसरा नहीं होगा, कभी ये दो होंगे, कभी ये नहीं होंगे. तो दे मे कीप चेंजिंग, but through the experience of the alumni, these faculty can have a mentoring network with the students through the alumni. So there is a need to streamline the mentoring process with the help of alumni. That will lead to perfect utilization of alumni's skills, experience and expertise. For financial assistance, everything runs on money. So how can we get the financial assistance? ट्रिपल टी जो मैंने अभी बात की, टाइम, टैलेंट और ट्रेजर. तो ट्रेजर भी चाहिए उनका. Alumni are the most likely group to support, as they have a sense of gratitude and want their institute to climb the ladders of success. सिर्फ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड ही नहीं है कि हम यहाँ से पढ़े हैं, बल्कि उनका इंटरेस्ट भी है कि इंस्टीट्यूशन बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे, हमारी भी रेपुटेशन बढ़ेगी. One of the major hindrances in meeting the requirements of a top-class institution like AMU is its low budget allocation. जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी उस हिसाब से बजट नहीं है हमारा. अपकीप मेंटेनेंस चल रहा है काम, लेकिन फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स, बीइंग एम्बिशियस, that can be facilitated by the alumni. So this not only affects the infrastructure but also the research and laboratory work of the college. जितना हम रिसर्च वर्क करना चाह रहे हैं उसका हमें इक्विपमेंट नहीं मिल पा रहा है. So collective effort from the alumni can meet this challenge in a very effective way. Alumni can join hands in meeting the budget shortfall, an ambitious budget shortfall. There are a number of ways in which financial assistance can be provided. Some of them are building infrastructure. The funds available to the institution are not enough to meet the requirements of modern day infrastructure. The institute lacks modern updated labs, smart classrooms, and modern teaching tools. With the help of alumni, these requirements can be met up to a great extent. है ना? बिल्डिंग में सिर्फ बिल्डिंग नहीं आती, लैब इक्विपमेंट भी आते हैं, फर्नीचर भी आता है, स्मार्ट क्लासरूम्स भी आते हैं, टीचिंग एड्स आते हैं. सो alumni कैन वेरी इजीली हेल्प. हमारे 3 alumni जो बहुत यंग हैं, they sponsored a lab equipment in one of the mechanical engineering labs. कोई पुराना valve था, अब that had to be replaced by a modern valve. So that costed around 1,80,000. उसकी फंडिंग नहीं मिल रही थी कि भाई पुराना तो है आपके पास. So they said no, we'll provide the modern valve. तो उन्होंने जो है वो 60 हज़ार रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किया तीनों ने, 1,80,000, और उसको एक टीचर हुए पास्ड अवे, उनके नाम उन्होंने उसको डोनेट भी कर दिया, स्पॉन्सर कर दिया. So alumni can help by taking lead in infrastructure development of a particular field. For example, recently the Alumni Association of North America donated smart classrooms to the college and the university. But more such efforts are needed. है ना, सारे कम से स्मार्ट क्लासरूम्स बन जाएं, उसकी ज़रूरत है. Moreover, alumni can negotiate with third-party suppliers about cost and equipment.
जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि भाई हम तुमसे इतने $1 million का हम सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, व्हाई डोंट यू प्रोवाइड एन एकेडमिक वर्जन? हम तुमसे इतने इक्विपमेंट ले रहे हैं, व्हाई डोंट यू प्रोवाइड सम इक्विपमेंट at a very nominal cost to my alma mater? You can always negotiate with the third party suppliers. फिर फंड रेजिंग कर सकते हैं वो हमारे लिए. Alumni are the brand ambassadors of their institution. They can organize various fundraising programs for the institute and university. Moreover, they can also help by spotting and searching for people who can support the institution and help in maintaining good long-term relation with eminent business personalities. गल्फ में ये लूलू मॉल वाले हैं, उनको ही इज नॉट आवर alumnus, लेकिन उनको कांटेक्ट किया, so he sponsored quite a few things in our university. So eminent business personalities could be involved with the help of alumni that way. They can help us in research and projects. They can help in funding the ongoing research projects, and by using their influence to negotiate with the third party suppliers, as just now I've said. They can play an influential role in helping the faculty and students back good research projects associated with the industries. Live projects के ऊपर वो हमारी research को divert कर सकते हैं. Arranging scholarship for needy students. Alumni can help students who can't pursue their goals only because of financial limitations. कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, costly है, नहीं कर पा रहे हैं. So let money not be a bottleneck. That is what alumni can ensure for us. There are a number of students who come from very poor background and they lack financial assistance to meet their daily requirement. उनको scholarships दे सकते हैं. A number of highly talented students don't go for costly courses only because of financial inability or difficulty. So again, उनकी education में money should not be a hindrance, should not become an obstacle. That should be facilitated and taken care of by the alumni. Interacting with the students, ये भी बहुत important contribution है alumni का. Interacting with the students. Alumni can take out some time from their work and interact with the students to understand their needs and give remarks. मैं आपको example दूं, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, if the alumni they come and just stand before our students, कुछ ना बोलें, सिर्फ खड़े हो जाएं आकर यहाँ पर, कुछ ना बोलें, even then they will be a motivation for our students. कि भाई ये इसी बेंचेस पर पढ़े हैं, इसी हॉल में रहे हैं, इसी लाइब्रेरी में इन्होंने पढ़ाई की है, and now they are successful entrepreneur, successful businessman, successful researcher, तो हम भी बन सकते हैं. ठीक है. अच्छा, on top of it, if they interact with the students are very keen observers. They will learn from how they behave, how they interact, how do they carry themselves. सारी minute चीजें देखकर बच्चे उससे सीखेंगे. Students will learn from the successful people. What makes you successful? That will be the thing that they will learn from them. Alumni are great role models for current students and are often well placed to offer practical support to students as they start their careers. Alumni interaction with the students can raise their morale and make them more ambitious in their work. अब motivation provide करना है students को, कुछ alumni को लाके खड़ा कर दीजिए. As teachers, you keep on telling your students, वो तो कहेंगे अरे ये तो कहते ही रहते हैं. But if you bring a few successful alumni, interact with this, get them interaction with the students, interacted with the students, and the students will all, will be pumped up. कि नहीं, हमें भी कुछ करना है. Promoting entrepreneurship by funding good business ideas. देखिए, Make in India cannot be done without the help of alumni. Alumni, in collaboration with the institution, can organize various competitions on generating business ideas. पहला step, generating business ideas. Alumni can fund the students in developing their business model prototype. उसकी funding कर दें, जो successful business ideas हैं, उसकी funding कर दें. Or they can help in meeting students with angel investors who can fund the budding entrepreneurs during their initial stage. तो आइडियाज जनरेट करवाएं, उसको या तो फंड कर दें या एंजल इन्वेस्टर से फंडिंग करा दें. With the expertise and financial assistance, they can help or can become partners in successful business ventures. इनसे कह लें कि भाई ठीक है, तुम करो, हम फंडिंग कर रहे हैं, तुम्हारा आइडिया, हमारे पैसे, और we will split the benefit in whatever ratio we decide upon.
Alumni having their own business firms can help these students in setting up of their business model. उनको वहां स्पेस दे दी, इंक्यूबेट करा दिया उनकी आइडिया को. We have an active entrepreneurship development cell which has performed numerous activities in the last few years, primarily with the help of alumni. बिना alumni के entrepreneurship development cell चल ही नहीं सकता. Because to become an entrepreneur, you have to have a big heart. आपको कहीं से चाहिए motivation, है ना. तो उस courage के लिए alumni can only provide that courage and that encouragement. अच्छा खैर, अब आए हम क्या इश्यूज हो सकते हैं एलुमनाई के साथ. देखिए, यू हैव टू डील फ्रॉम एन इंडिविजुअल लेवल टू एसोसिएशंस और इवन फेडरेशंस. एवरी इंडिविजुअल एलुमनस और एलुमनाई इज इंपॉर्टेंट. आप किसी को भी निग्लेक्ट, इग्नोर, ओवरलुक नहीं कर सकते. ऑल ऑफ देम आर प्रेशियस. जस्ट एज इफ यू रिमूव अ ब्रिक फ्रॉम अ वॉल, द एंटायर वॉल गेट्स वीकर. फिर इनकी एसोसिएशंस होती हैं, या जहां पर बहुत सारी एसोसिएशंस हैं, उन्होंने एक फेडरेशन बना ली, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइज, फेडरेशन ऑफ एलुमनाई एसोसिएशंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका, है ना. अब दीज फेडरेशंस आर यूजुअली मनीलेस एंड टूथलेस. उनके पास ना पैसा है ना पावर है, बट दे आर वेरी वेरी हाईली रिस्पेक्टेड बिकॉज दे आर द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एसोसिएशंस. बिल्कुल ऐसे जैसे प्रेसिडेंट के पास ना पावर है ना पैसा है, पैसा पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, बट स्टिल president has to be respected the most. So बिल्कुल federations are like presidents and associations are like prime ministers, but we have to respect federations more than the associations. How to recognize and control the associations? We may have an association which has just a few members, 10 member हैं, 12 member हैं, छोटी जगह पर association बनी हुई है. Huge size associations, दिल्ली में जाइए तो AMU Alumni Association may have some 10,000 members. तो अब आप छोटी एसोसिएशन को इग्नोर नहीं कर सकते. यू हैव टू गिव देम ड्यू इंपॉर्टेंस. तो हाउ टू डील विद देम, है ना. फिर एक बहुत ट्रिकी इशू आता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एलुमनाई एसोसिएशंस. देखिए, रजिस्ट्रेशन कराना इनएविटेबल हो जाता है. बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे कि हम रजिस्टर कराएं अपने एलुमनाई एसोसिएशन को. नहीं, तो मैं कहता तो हूं कि रजिस्टर कराइए, इसलिए कि बिना रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे सोसाइटीज एक्ट के बेनिफिट्स they may not be reaped, those benefits may not be obtained. But there is a word of caution. जैसे alumni association को आप रजिस्टर कराते हैं, they tend to become holier than thou. वो सोचते हैं कि अब हम यूनिवर्सिटी से ऊपर उठ गए. हमारे साथ हुआ ऐसा. The alumni association, when they got registered, they came to us and they said, how dare you organize the alumni meet without our consent. आपने हमसे पूछा क्यों नहीं? alumni के नाम पे तो हम registered body हैं. यूनिवर्सिटी must have asked us, must have co-organized. तो वो समझते हैं कि हम अब ऊपर उठ गए और alumni हमारा ठेका हो गया, and whatever alumni, anything and everything that has to do with alumni will have to be routed through us, which is not true. इंस्टीट्यूशन की अपनी इंपॉर्टेंस अपनी जगह इंटैक्ट है. So registration, even after the registration of alumni associations, they should not become more powerful than the alma mater. So that is the word of caution that we have to ensure. फिर एक इशू आता है मल्टीपल एसोसिएशंस इन वन प्लेस. जैसे गल्फ कंट्रीज में प्राइमरली दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट बिकॉज वी डोंट हैव इलेक्शंस इन द गल्फ कंट्रीज. वहां पर डेमोक्रेसी है नहीं, एसोसिएशन इलेक्शन होता नहीं है. तो अब एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर कैसे बने? ऑल इलेक्शंस आर बैंड. अब उसमें क्या होता है, एवरीबडी स्टार्ट्स फॉर्मिंग हिज और हर ओन एसोसिएशन कि मैं प्रेसिडेंट, ये सेक्रेटरी, वो ट्रेजरर. दूसरे खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, एसोसिएशन तो हम बनाएंगे, आई एम द प्रेसिडेंट, ही इज द सेक्रेटरी, शी इज द ट्रेजरर. तो अब मल्टीपल एसोसिएशंस हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल, इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वी हैव 3 एसोसिएशंस साइमल्टेनियसली एग्जिस्टिंग देयर. अच्छा, ये इशू सिर्फ गल्फ बेस्ड एसोसिएशंस में नहीं है. आप कहें भाई ये तो एक छोटी प्रॉब्लम है. नहीं, छोटी नहीं है. Of all the places, United States of America has this problem. वहां पर इलेक्शन की वजह से नहीं, इलेक्शन तो वहां हो सकता है. अब क्या हुआ, वॉशिंगटन डीसी में हमारी एक एसोसिएशन है. द ओल्डेस्ट एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज इन वॉशिंगटन डीसी.
द एडजेसेंट स्टेट इज मैरीलैंड। मैरीलैंड वालों ने कहा कि हम भी बनाएंगे अपनी एसोसिएशन। अब डीसी वालों ने कहा तुम क्यों बना रहे हो भाई, तुम तो जस्ट एडजेसेंट टू अस, यू कीप कमिंग टू डीसी एवरी डे फॉर वर्क। आप ड्राइव करते हैं, रहते हैं मैरीलैंड में, ड्राइव करते हैं, वर्क प्लेस आपकी डीसी में है, आप अपने वीकेंड्स के लिए शॉपिंग करने डीसी में आते हैं, तो एक ही एसोसिएशन रहने दो। उन्होंने कहा नहीं हम बनाएंगे। तो अब एक डिस्टेंस क्राइटेरिया हमको बनाना पड़ा। अब वो बना रहे थे मोर चेयर पोजीशंस की, 2 लोग 2 प्रेसिडेंट हो जाएंगे और 2 सेक्रेटरी हो जाएंगे, 2 ट्रेजरर हो जाएंगे, मैं भी प्रेसिडेंट बन सकूंगा। तो अब डिस्टेंस क्राइटेरिया रखना पड़ा कि भाई 2 एसोसिएशंस शुड हैव एटलीस्ट 50 माइल्स डिस्टेंस बिटवीन देम, दे शुड बी 50 माइल्स अपार्ट। अब फिर इस पे क्वेश्चन मार्क्स, व्हाई 50 माइल्स, व्हाई नॉट 60, व्हाई नॉट 40? तो एक ट्रिकी इशू हो जाता है। हमारी पोजीशन एज द यूनिवर्सिटी, वी रिकॉग्नाइज एज मेनी एसोसिएशंस एज आर आउट देयर। हम कहते हैं हम इसमें नहीं पढ़ते कि तुम 3 बनाओ कि 4 बनाओ कि 1 बनाओ, तुम जो भी बना रहे हो हम सबको रिकॉग्नाइज करेंगे, द मोर द बेटर। ठीक है, तुम 5 बनाओगे, उसमें से 2 काम करेंगी, 3 काम करेंगी, कुछ ना कुछ तो यूनिवर्सिटी का भला होगा, some benefit will accrue. So you make as many associations as you want. Why should we be embroiled in the controversy that you are the correct association and you are not? इसको भी हमने कहा you're not the correct association, वो तो फिर यूनिवर्सिटी को हेल्प करना बंद कर देगा। We want help from everybody. So that is our position, recognize as many as are out there. फिर alumni को कंट्रोल और उनको करने के लिए we need the alumni committee. तो एक alumni affairs कमेटी हमने बनाई यूनिवर्सिटी लेवल पर, with VC as its vice chancellor as its patron and pre-VC as its co-patron. There is the chairman. For last 5 years, I am the chairman of the alumni affairs committee at AMU, and that is the experience that I am speaking with. There is a vice chairman and other members from amongst the faculty members. According to an estimate, we have around 2 lakh living alumni from the Aligarh Muslim University. तो अब उन सबको मैनेज करना विदाउट अ कमेटी में नॉट बी पॉसिबल, तो इसलिए अलुमनाई अफेयर्स कमेटी बनाई गई। इन एडिशन टू दैट वी हैव एन इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटी एंड नेशनल एडवाइजरी कमेटी। सो दे आर द सीनियर एक्टिव एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग अलुमनाई और अलुमनी, नॉट नेसेसरली द एसोसिएशन चेयर होल्डर्स। यानी ऐसा नहीं है कि सारे एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट्स को रख लो एडवाइजरी कमेटी में, सेक्रेटरीज को रख लो, नो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स दैट वे। ये हमारा प्रेरोगेटिव है, वीसी का प्रेरोगेटिव है कि वी वांट टू हैव ओनली द सीनियर एक्टिव एंड कंट्रीब्यूटिंग एलुमनाई। बहुत सारे प्रेसिडेंट्स होंगे जो इलेक्शन से तो जीत गए लेकिन कुछ करना नहीं चाहते हैं, सो व्हाई शुड वी कीप देम इन द एडवाइजरी कमिटीज, है ना। तो हमने इस तरह सीनियर एक्टिव कंट्रीब्यूटिंग एलुमनाई की एडवाइजरी कमिटीज नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर बनाई हुई है। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं हमें नहीं रखा एडवाइजरी कमेटी में, तो भाई ठीक है, हम जरूरत समझेंगे रख लेंगे, आपको आइंदा रख लेंगे, but we want such people who have been contributing and who want to contribute. So एक alumni affairs committee from within the university and advisory committees from amongst the alumni at the national and international level. फिर alumni affairs committee का हमने रोल और चार्टर चॉक आउट किया हुआ है। आउटकम बेस्ड एजुकेशन में आपको याद होगा हमने विजन मिशन की बात की थी, तो रोल इज लाइक द विजन एंड चार्टर इज लाइक द मिशन, है ना। तो to act, what is the vision or the role? To act as effective interface between the alumni and AMU so as to optimize the potential of the Alig fraternity. Alig fraternity एक term है, all the graduates of the Aligarh Muslim University, we call them as Alig. So to optimize the potential of the Alig fraternity as a key stakeholder in the future growth of the alma mater. It is like the vision of the Alumni Affairs Committee. फिर चार्टर, in order to meet this vision, strengthen alumni alma mater bondage, support alumni driven initiatives, facilitate student scholarships or sponsorships, facilitate MOUs and collaborations with overseas institutions, facilitate a league academic enrichment program, ये मैं आगे डिस्कस करूंगा क्या है ये, maintain alumni website and alumni data, monitor ongoing projects and provide timely feedback, coordinate the visits of alumni to the AMU, organize alumni meets and facilitate other alumni related programs. तो ये हमारा चार्टर है which will help us in playing the role that is also laid down
देखिए यही बात है जो मैंने पिछले लेक्चर में भी एम्फसाइज किया था, डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीज हवा हवा में होती है वो हवा में रह जाती है। इफ यू पुट इट ऑन अ पेपर, एवरीबॉडी नोज what he or she or they are supposed to do. So much so that we've also put down the duties of the chairman of Alumni Affairs Committee on paper. The chairman will be in charge of the office of the Alumni Affairs Committee and look after the day-to-day work of the committee. He or she will formulate plans for approval of the committee and perform all other activities to further strengthen the bond between the university and the alumni. He or she will be the convener and maintain all records related to the Alumni Affairs Committee. Perform all other functions which may be delegated to him by the Vice Chancellor. ये duties हो गई chairman की. Vice chairman की duties are also laid down. Will assist the chairman and perform such other duties as assigned to him by the chairman. He will also look after the work of the chairman in his absence. So your role, charter, duties, all these I am telling you so that you can take a lesson from this. ये नहीं है कि you have to take it as it is. It may vary in your case. Just as vision mission में मैंने बताया था, vision mission may vary. You will not get it overnight in a dream. So you have to formulate them in a hard way by a consultation process. अच्छा, अब आप you must be wondering कि role and charter of Alumni Affairs Committee is laid down, but why the role and charter of the advisory committee is not laid down? देखिए, advisory committees are not the internal bodies, they are external alumni. तो हम उनके ऊपर कोई चीज थोप नहीं सकते हैं. We have told them that for you sky is the limit. You decide what role and charter you want to play. And that may vary from the advisory to advisory, from the advisor to advisor. Whatever role you want to take for yourself, please take it, but do contribute. तो उनके लिए कोई role and charter नहीं है. They are free to work for the benefit of the alma mater in their own ways. फिर कनेक्टिंग विद एलुमनाई, बिना कनेक्शन के तो कोई एलुमनाई का फायदा नहीं उठा सकते हम. तो हमने एक वर्ल्ड एलुमनाई डायरेक्टरी बनाने की कोशिश की. There are certain issues that we faced. Firstly, people did not want to share their contact details because they were scared कि unsolicited calls आएंगी, spam emails आएंगे, emails in sensitive areas or countries. जैसे कोरिया वालों ने कहा कि हमारे पास तो हर email देखा जाता है. If we share our details, the students might send any email which our government may not like. फिर people may start calling or emailing for political purpose. तो there was lot of apprehension. तो हमने कहा नहीं भाई, कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप शेयर कीजिए ताकि हम लोग टच में रहें, अलुमनाई टच में रहें, स्टूडेंट्स अलुमनाई से टच में आ सकें. देन ओनली यू कैन हेल्प. फिर हाउ टू गैदर अलुमनाई डेटा. हमने पहले गूगल फॉर्म बनाया, बट दैट वाज प्रोन टू लीकेज. भाई मान लीजिए हमने मिस्टर एक्स को भेजा गूगल फॉर्म का लिंक, मिस्टर एक्स ने उसको चेंज करके वाई को दे दिया. अब जितना डेटा वाई देंगे वो हमारे पास नहीं आएगा, वो एक्स के पास चला जाएगा, बिकॉज ही और शी हैज चेंज अकॉर्डिंग टू हिज नीड. तो इसलिए फिर गूगल फॉर्म पे बहुत से लोग एप्रीहेंसिव थे. तो फिर वी डिवाइज्ड एन MS वर्ड अटैचमेंट. वो हमने लोगों को भेजा कि इसमें आप फिल इन करके हमें भेजिए, वी वांट टू हैव द स्ट्रक्चर्ड डेटा फ्रॉम यू. फिर हमने वेबसाइट फॉर्म्स भी बनाए कि आप वेबसाइट पे आके भर दीजिए डायरेक्ट. तो ये टेम्पलेट मैं आपको दिखाता हूँ. MS वर्ड का अटैचमेंट क्या था. ईमेल मैंडेटरी रखा हमने कि भाई ईमेल तो दीजिए ही, वरना कैसे आपसे हम कांटेक्ट करेंगे. आपका यूनिक ID फ्रॉम द यूनिवर्सिटी विच वी कॉल एज द एनरोलमेंट नंबर. फिर योर करंट पोजीशन, योर नेम, योर जेंडर, highest qualification from AMU, last hall attended, faculty, year of joining AMU, year of leaving from AMU, current country, current city, current designation, current company or firm or institution, permanent address. मोबाइल नंबर हमने छोड़ दिया कि आप दे दें तो अच्छी बात है, नहीं दें तो कोई बात है. Many people readily offered their mobile number because they wanted to help the students. Many held it back because they didn't want to share for whatever reason. तो ये हमने स्ट्रक्चर्ड डेटा लेकर हमने वर्ल्ड एलुमनाई डायरेक्टरी बनाई, विच वी रिलीज्ड एट आवर सेंटेनरी सेलिब्रेशंस. वी कंप्लीटेड 100 years एज द यूनिवर्सिटी इन 2020.
तो ये alumni directory हमने उस मौके पर रिलीज की, and there are some 12,000 plus contacts. So we are taking it as version 1.0. Still a lot of work is to be done, and it is ongoing. Next version हम लोग निकालेंगे. तो अब हमें जब ये आ गई तो बहुत से alumni फिर जगे, अरे हमारा डेटा नहीं है, तो हमने कहा क्यों नहीं दिया था डेटा. So now they are sharing their data. So hopefully the next version will be a bigger one with more contact details. Then there are some certain online platforms for Alumni Connect. एक हमारा खुद के alumni ने alumnus ने बनाया था amudirectory.com. It was very useful. उसमें आप क्लास वाइज सर्च कर सकते थे, बीटेक क्लास ऑफ 92 who all have graduated, हॉल ऑफ रेजिडेंस वाइज कि सुलेमान हॉल में कौन कौन स्टूडेंट रहे थे, या लोकेशन वाइज दैट कुड बी नेटिव प्लेस, भाई लखनऊ के रहने वाले कौन कौन लोग हैं, या इस वक्त डैलस में कौन कौन alumni हैं. So that way we were able to search the information of the alumni. But unfortunately, the technology on which this website was built, that became obsolete. Please mute. So that became obsolete. So this website had to be pulled down. फिर कुछ commercial ones भी हैं, जैसे Alma Shines है. Alma Shines, they keep sending emails. तो एक फ्रेमवर्क देते हैं जिसमें आप अपने alumni का डेटा मेंटेन कर सकते हैं. हम लोगों ने एक टेलर मेड भी बनवाई, अली कनेक्ट. भाई ये कौन अनम्यूटेड है? प्लीज म्यूट योरसेल्फ, यू आर डिस्टर्बिंग द होल क्लास. काजल बिस्वास, म्यूट योरसेल्फ. काजल बिस्वास, सॉरी. तो aliconnect.com की हमने वेबसाइट भी बनाई, iOS एंड एंड्रॉइड एप्स भी बनाए. दिस इज अ वेरी यूजफुल. देयर मस्ट बी अ प्रमोशनल वीडियो ऑन अली कनेक्ट अवेलेबल ऑन यूट्यूब, वो देखिए आप लोग. तो इसमें क्या, alumni to alumni interaction, student to alumni interaction, entrepreneur to entrepreneur interaction, lot of possibilities are there. तो ये हम आप अच्छा, ऑनलाइन में फायदा ये होता है कि दैट इज डायनामिक. यू चेंज द जॉब, यू कैन चेंज इट. डायरेक्टरी में ये वंस प्रिंटेड दैट विल रिमेन अनलेस यू हैव द न्यू वर्जन कमिंग अप, है ना. तो आप लोकेशन जॉब चेंज करने से online platforms में that reflects immediately. You log in and you change your location of the company, whatever. फिर alumni meets are very important component. For our university, the Founders Day celebrations happens on October 17. And a very important component of the Founders Day is the dinner, Sir Sayyid Day dinner. Many people are allergic to this dinner. वो कहते हैं अरे भाई हम dinner खाते हैं घर चले जाते हैं. Is that all? We say no, that's not all. But let us at least keep getting together for the dinner. One dinner, two dinner, then we will sit down to think about the university as well, sooner or later. अब एक dilemma ये होता है कि alumni meet, should it be adjacent to the Founders Day or spaced? बहुत से लोग adjacent रखना चाहते हैं because once they are visiting the campus, they will take part in the Founders Day as well as the alumni meet the next day or a day before. But many people prefer to have it spaced so that they can have the Founders Day at their own places and come for the alumni meet separately. वरना उनकी अपनी जगह पर जो Founders Day celebration है, that will get affected. फिर हमारे गेस्ट हाउस पे भी बहुत लोड हो जाता है अगर दोनों को एक साथ रख लो. Founders Day के लोग भी आ रहे हैं और alumni भी आ जाते हैं, तो where to house them? तो ये एक tricky issue होता है alumni meets में. Nevertheless, we organize university level alumni meet once every year. ये तो यूनिवर्सिटी लेवल का होता है. फिर फैकल्टी और डिपार्टमेंट लेवल alumni meets we organize at the time of conferences. किसी डिपार्टमेंट ने, फैकल्टी ने कोई कॉन्फ्रेंस की, तो the graduates of that department may come for the conference as well as they may stay for a day longer, and the last day could be the alumni meet. ऐसी जुबलीज होती हैं, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली. The student or in between 30 years, 35 years, 40 years के लिए स्टूडेंट्स आते हैं हर साल. सिल्वर जुबली तो बहुत पाबंदी से होती है. गोल्डन जुबली कुछ लोग हिम्मत करते हैं and they come, and believe me, when they come for the golden jubilee, even those senior alumni, they become child. तो भागते फिरते हैं, अरे इस बेंच पे बैठा करते थे हम, अरे इस पेड़ के नीचे हम खाना खाते थे, ये करते थे, वो करते थे. 1968 batch people, when they came for the golden jubilee, engineering college batch,
1968 में उस वक्त उनकी क्लास में एक ही गर्ल स्टूडेंट रही होंगी, एंड शी केम फॉर द गोल्डन जुबली. And will you believe it? All of them were circling around her the way they must be circling when they were students. तो गोल्डन जुबली के वक्त भी they had this much enthusiasm in them. तो अब मैं 2 alumni meet डिस्कस करता हूं. एक alumni meet 2018 जिसमें we had an inaugural session in the day, जिसमें VC आए थे. अतर को भेजो. जिसमें VC was there, formal inaugural session. In the afternoon session, we send the alumni to the respective faculty. Over there, a presentation on the progress of the faculty by the dean was given. Interaction with the students was carried out. Interaction with senior and retired teachers. Discussions on the interesting anecdotes from their times. Syllabus revise करवा लिया, feedback collect कर लिया उनसे, future plans and role of alumni हमने discuss कर लिया. So that was a very useful session. MIC गेस्ट हाउस का तुम्हारा नंबर है तुम्हारे पास? बात कर लो, कह दो क्लास ले रहे हैं, है ना? कह दो क्लास ले रहे हैं, 12:30 के बाद बात कर लेंगे आपसे. दूसरी अलुमनाई कॉन्क्लेव 2019. देखिए अलुमनाई मीट में तो everybody and anybody can come. We charge registration fees. Many people say कि registration fees क्यों ले रहे हैं? Let the alumni come. No, we want only the sincere and the serious alumni to come. Registration fees nil कर देंगे तो अलीगढ़ में 10,000 alumni खड़े हो जाएंगे, मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा. So we kept a nominal registration fees. 2,500 if you're coming alone and 5,000 if you're coming with your family. ताकि only the senior and the sincere alumni may come. और फिर alumni, they are in a position where they can pay. So why put a burden on the university now? The alumni meets, there should be a registration fees. Alumni conclave was by invitation. And the theme was roadmap to centenary celebration. 2020 में हमें अपना centenary celebration करना था. So we wanted to do a brainstorming with our alumni. So 2 office bearers from each of the alumni associations from across the world were invited. Participation was only by invitation. There was no registration fees. क्योंकि invite किया था तो registration fees नहीं थी. We provided the local hospitality. But the travel expenses were borne by the concerned person or the association. ये देखिए alumni meet 2015. अच्छा alumni meets में the chief guest, the guests of honor, they are all the senior alumni. वो पूरा alumni का ही function रहता है. आप देख सकते हैं यहाँ पर Dr. Ashok Seth, the famous cardiologist, he's our alumnus. He was the special guest. Nasiruddin Shah, he is our alumnus. Okay? So all the senior alumni, they come. ये पूरा full house, Kennedy Hall हमारा 1,300 seater, it was all full. This was Alumni Meet 2016. This is Professor Suhail Sabir, who was the Dean of Alumni Affairs before me. Right? And then we have Alumni Meet 2017. 2018 was the first Alumni Meet when I had taken over as the Dean of Alumni Affairs, and I organized this in 2018. This is 2019 Alumni Conclave, in which Dr. Abdullah came all the way from Washington, D.C. So just to give you a glimpse as to what you can expect in the Alumni Meet. अच्छा 2020 और ये 2020 वाली फिर online हुई because of the pandemic. 2020, 21, 22, all these were online. 22 में फिर हमने offline किया. This is the silver jubilee of my batch. I graduated in 99. So this is the silver jubilee. All my classmates of engineering had come. And over here, I am sitting not just as their classmate, but as the principal of the college as well. And everybody held so much pride that one of their classmates was the principal. And it happened, one of our classmates from Dallas, he's here, Faraz, he was conducting the inaugural session. So when he addressed the Vice Chancellor, he said, Honorable Vice Chancellor, Dean, he said, Distinguished Dean,
When the turn to address the principal came, he said, "और हमारा अपना Sufyan." So everybody was overjoyed. Everybody was laughing, and they held so much pride that one of their classmates was the principal of the college. So these are my classmates. Silver Jubilee we organized. Now talking about the major contributions of alumni, a residential hall of residence for NRI students is being developed by them. A building for the Faculty of Management worth about rupees 20 crores is given by single alumnus, Dr. Frank Islam. He also gave an auditorium for the Department of Mass Communication worth about 1 crores. Several smart classrooms are given by them. During the pandemic, rupees 1.73 crores was raised by the alumni in a span of just 2 months for the oxygen plant and other essential medical equipment. An ancestral house was donated by brothers Adil Chauhan, Tariq Chauhan, who are big entrepreneurs in the Middle East, and that is being used for the innovation cell of the university. The alumni can help in the placement and internship of these students. So a lot of contributions have been pouring in from the alumni. Now, some of the good practices from other institutes. For example, IIT Kanpur, I'm an alumnus of, they keep sending emails to me to find out the missing classmates. They email me to find out, are you in touch with so-and-so classmates? Please share their email address so that we can also take them on board. IIT Delhi issues an iCard to every alumni that can be used for their library and sports facilities. They have also issued a lifelong email address, mmsbeg@alumni.iitd.ac.in. अब ये जितने alumni हैं उन सब के लिए उन्होंने एक एक एड्रेस बना दिया जो लाइफ लॉन्ग रहेगा. University of California, Berkeley, of which I have been a postdoc, they support my email address with them even today. आज भी उनका email address काम कर रहा है, वो लाइफ लॉन्ग काम करेगा. Their iCard continues to be valid for the campus bus. Abhi bhi, I was there in 2005 to 2006, but still if I go and I flash that iCard on the campus bus, I am allowed to board it for free. ऐसी Berkeley Tower है जिससे पूरा Silicon Valley दिख जाती है. They charge $2 for taking you up on a lift. So there also, if I flash my iCard, they'll take you for free. छोटी चीज है, $2 is not a big amount, but that shows the sense of attachment of the alma mater with the alumni, and you get overjoyed कि हमको इन्होंने respect दी. $2 दिया वो नहीं important है, respect दी, that is more important. So that is how these good practices are. ये वो email है जो IIT Delhi से आया था कि we want to give you an email for lifelong. Birthday messages come from the desk of the director of IIT Kanpur. डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर. ऑटोमेटेड ईमेल है हमारी, वहां पे डेट ऑफ बर्थ तो होगी अल्मा मेटर के अंदर, वो तो पहली चीज होती है जो होती है. उस डेट में एक ईमेल चला गया, शोज दे आर कनेक्टेड टू अस. फिर एलुमनाई फीडबैक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर करेक्शन, फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, फॉर इम्प्रूवमेंट, फॉर एक्रेडिटेशन. पिछले लेक्चर में हमने यही बात की थी. ABET, NAC, NBA, whatever you talk about, feedback from the alumni is very important. In the outcome-based education, we need senior alumni feedback for PEOs or all alumni for program outcomes. वो जो pyramid हमने बनाया था, vision, mission, उसके बाद PEO और PO. तो PEO और PO दोनों के लिए हमें feedback चाहिए alumni से, है ना? This diagram we discussed in detail. अब मैं दोबारा इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बट यू कैन वेरी वेल सी दैट फॉर PO evaluation the indirect component has alumni survey in it. For PEO evaluation the indirect component again has alumni survey in it. डिफरेंस ये है कि ये वाले सीनियर alumni होंगे 4-5 years या more they have graduated. These are all the alumni, fresh as well as old, everybody. तो alumni feedback is very important. फिर एक अच्छी प्रैक्टिस हमने शुरू की, चिल्ड्रन ऑफ alumni bonding program. Alumni, they have the emotional connect, but their children may have gone elsewhere to study, somewhere in the Western University, but we want their children also to be emotionally attached to it. तो उसके लिए हमने ये कशिश प्रोग्राम स्टार्ट किया. कशिश मीन्स अट्रैक्शन.
which was flexible in duration, timing, and curriculum. No credit as such, no tuition fees, only the boarding lodging charges. And we offer sports and curricular activities, residential life, library, labs, and classes. We assign mentors and we issue certificates in the end. तो ये इसका flyer है. Whenever the parents they are coming to the alma mater, they can bring their children along. And they can have a flexibility of 1 to 8-week course in the faculty of relevant subject. They can get to know about Sir Syed mission awareness, residential life in AMU hall, Urdu proficiency classes, literary and cultural activities, games and sports. They can be volunteer for community work. They can take part in drama, debate, Baitbazi Mushaira, film club, literary festival, eco club. We have a 125-year-old riding club, so they can enjoy riding also. Our students, they go for National Equestrian Championship, so they are pretty professionals. Swimming, hall week, robo club, incubation center, service and adopted colleges, urban and rural health centers, tree plantation, and a lot more. Flexible hai, so they can design on their own way through the mentors assigned to them, and a relevant certificate will be issued to them. Please mute yourself. फिर ये अलीग academic enrichment program, it was started by Canada alumnus as the summer university. Whenever he used to come to visit us in the summers, he will come on his own, he'll stay for 2 months on his own expenses, and he'll teach our students for 2 months. तो हमने इसको बढ़ाया, हमने कहा whenever an alumnus is coming home, they can have the interaction with the students on a subject, or just for motivation, counseling, career guidance, or just for the exposure and experience sharing. We can have online sessions too, but face to face is preferred, ताकि बच्चे उनसे सीखें. ऑनलाइन सेशंस कुछ हमने किए, पैंडेमिक में भी किए या वैसे भी कर लेते हैं, बट फेस टू फेस हम प्रीफर करते हैं, ताकि वो जब भी आ रहे हों तो आकर 1-2 दिन हमारे साथ स्पेंड करें, हमारे बच्चों के साथ स्पेंड करें. सो दिस इज अलीग एकेडमिक एनरिचमेंट प्रोग्राम. फिर alumni guest house. The university guest houses have a priority for conference delegates, official guests, or university engagements. Alumni are not able to find accommodation at their convenience. कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है. तो हमने कहा कि alumni may build their own guest house by their contribution. Individuals or alumni associations can contribute. Rooms will be named after them. They will have a priority in reservation. खाली होगा तो हम अपना भी यूज करेंगे, लेकिन अगर वो आ रहे होंगे पहले से बता देंगे तो we'll have a priority in reservation for them. They can have the interiors according to their taste and theme. So this is the alumni guest house which is planned. The contributions have started pouring in, and we'll be starting the construction soon. फिर alumni endowment fund, ये IIT दिल्ली ने शुरू किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको काफी टेकअप किया कि alumni से कॉर्पस डेवलप कराया जाए फंडिंग का. An endowment is a donation of money or property to a non-profit organization which uses the resulting investment income for a specific purpose. जो डोनेशन है वो इंटैक्ट रहे, उसके जो इन्वेस्टमेंट की अर्निंग्स आ रही हैं उससे यूनिवर्सिटी के दूसरे काम किए जा सकें. Most endowments are designed to keep the principal amount intact while using the investment income for charitable efforts. Endowments tend to be organized as a trust, a private foundation, or a public charity. There are 4 kinds of endowments. पहला तो unrestricted endowments है, जो हम proverb कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल. So it is that. The alumni, these are assets that can be spent, saved, invested, and distributed at the discretion of the institution receiving the gift. Gift देके वो भूल गए, it is left to the wisdom of the university to use it. Term endowments usually stipulate that only after a period of time or a certain event can the principal be expended. जैसे किसी कॉन्फ्रेंस के लिए पैसा दिया तो कॉन्फ्रेंस तक तो कॉन्फ्रेंस में यूज कीजिए, फिर जो पैसा बच जाए उससे स्कॉलरशिप कर दीजिएगा या जो चाहिएगा कर दीजिएगा. A quasi endowment is a donation by an individual or institution given with the intent of having that fund serve a specific purpose. The principal is typically retained while the earnings are expended or distributed as per the specifications of the donor. Restricted endowments have their principal held in perpetuity while the earnings from the invested assets are expended as per the donor's specification. अपने फादर के नाम पे कोई स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ, इतना पैसा मैंने जमा कर दिया, उसकी अर्निंग से
हर साल 2, 4, 10 scholarships with the name of my father may be given out. So that is restricted endowments. Now in the next slide, you will be surprised to see the kind of endowments that the successful universities have. According to US News and World Report, the top 5 universities by endowment size at the end of the fiscal year 2017. अब तो और बढ़ गया होगा. Harvard University had $37 billion. Yale University has $27 billion. Stanford had $24 billion. Princeton had $23 billion. MIT had $14 billion. यानी आप इनकी सारी एड बंद कर दें तो सिर्फ इनकी इंडाउमेंट की अर्निंग से यूनिवर्सिटीज रन कर सकती हैं इतनी बड़ी बड़ी. ठीक है. फिर अब फ्यूचर प्लान्स. पहले तो मेंबरशिप फीस, एनुअल मेंबरशिप हो या इनिशियल, वन टाइम हो या एनुअल मेंबरशिप फीस ली जाए. व्हाट रिटर्न्स आर वी टू ऑफर. ऐसा ना हो कि वो अपने आप को स्टूडेंट ही समझने लगे, सारी फैसिलिटी चाहिए, तो फिर स्टूडेंट्स विल गेट अफेक्टेड. Their projects, action plans, progress updation should be told to them. Alumni achievements and offers. अब उसमें ट्रिकी पॉइंट ये है कि what to include and what to leave out. कोई बहुत ट्रिवियल चीज़ है, आप उसको छोड़ देंगे, वो बुरा मान जाएंगे, हमारी तो बात बताई नहीं, उनकी बता दी. So where to draw the line? नेटवर्क और स्ट्रॉन्गर करना है. अभी हमारे पास 12,000 प्लस है, उसको पूरा 2 लाख तक ले जाना है. Alumni newsletter should come out. We need to work on the endowments and distinguished alumni awards. ये भी हमारे लिए इसलिए मुश्किल है. IITs have it, distinguished alumni awards, because they are focused technology institutes. हमारे यहाँ तो आर्ट्स भी है, साइंस भी है, लॉ भी है, मेडिसिन भी है, एग्रीकल्चर भी है, इंजीनियरिंग भी है. तो अब उसमें कैसे डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई बनाएं. सो वी हैव फॉर्म्ड अ कमिटी व्हिच इज लुकिंग इनटू इट. और उसमें हम सोच रहे हैं कैटेगरी वाइज दें. आर्ट्स में एक दे दें, साइंस में एक दे दें, इंजीनियरिंग में एक दे दें, मेडिसिन में एक दे दें. इस तरह से करके we might come up with this distinguished alumni awards also. So thank you very much. That was all from my side. I'll take questions now if there are any. Thank you, sir. 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 sir. Thank you. It was great session, sir. Thank you, sir. I have a question. Sir. Sir. Thanks a lot, sir. United, sir. Sufyan Yeah, sir. go ahead. Ask your questions, please. Sir, may I ask? Amit Kumar sir. Thank you, sir. Okay, thank you, sir. सर, हम अपने देश में जब देखते हैं तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जी, उनमें बहुत ज्यादा अंतर है. आप तुलना करें AMU की IIT से या अदर ग्रेट यूनिवर्सिटीज से, लेकिन एड्रेस हो रहा है हम लोगों को जी, जो किसी कॉलेज में काम कर रहे हैं. कॉलेज की अपनी समस्याएं हैं. कॉलेज का जो एसोसिएशन बनाने की बात हो रही है, एलुमनाई एसोसिएशन, उसको बनाना कितना डिफिकल्ट है. जो आपने बताया है कि अचीवमेंट AMU का, उसको हम सर कॉलेज में इम्प्लीमेंट करना या किसी भी ग्रेट यूनिवर्सिटी से कंपेयर करना जी, असंभव है हम लोग के लिए. तो फंड रेज करना, असंभव तो मत कहिए, facilities असंभव तो मत कहिए. असंभव may not be a good word. सर मैं रियलिस्टिक बात बोल रहा हूँ. वी कैन नॉट कंपेयर आवर कॉलेज टू सेंट स्टीफेंस, हंसराज, हिंदू कॉलेज लाइक दैट. तो सर हम लोग के सामने बिगर समस्या है कि हम लोग कैसे इसको रन कराए स्मूथली, क्योंकि यहाँ तो जो हमारे एलुमनाई है वो ऐड ही नहीं होना चाहते कॉलेज से. फंड रेज करने की बात तो दूर की है. वहाँ वो आपने हार्वर्ड, येल, प्रिंसटन का दिखाया, अरबों डॉलर में उनका है. यहाँ तो इस क्या बोलता है, रजिस्ट्रेशन फीस तक नहीं देना चाहते हैं वो लोग. अच्छा अमित साहब, अब मैं अपनी बात जी हूँ. सर. आपने अच्छी बात उठाई. देखिए यही फर्क है विजन और मिशन में. आपका कॉलेज आज सेंट स्टीफेंस नहीं है, या आज हंसराज नहीं है, या आज AMU नहीं है, या आज IIT नहीं है, लेकिन आप ये सोच कर चलिए ना कि हम 50 साल बाद हमारी भी एक स्टैंडिंग होगी, हम भी कहीं ना कहीं खड़े होंगे. ऐसा ना हो कि 50 साल बाद भी हम वही रहें जो आज हैं. ऐसा ना हो कम से कम. मतलब सर क्राइटेरिया जो है
जी, जो जी, ये सब तो नेक के थ्रू हो रहा है, जो नेक का जो क्राइटेरिया है वैसे वैसे बनाना है। हाँ, हाँ, पैरामीटर तो सबके लिए सेम है, ये तो नहीं है हमको स्पेशल प्रिविलेज मिल रहा है कि नहीं आप लोग। है, सही है। लेकिन देखिए 20 मार्क्स उस कमेटी के भी होते हैं, जो कमेटी आती है वो भी देखती है कि आप रूरल एरिया में सर्व कर रहे हैं, आप नए कॉलेज हैं या पुराने कॉलेज हैं, उस हिसाब से वो उसको स्केल को ऊपर नीचे करती है। यू डोंट हैव टू लूज हार्ट। हम जो हमारा विजन है नानी की बात करो। और देयर हैज टू बी अ बिगिनिंग। भाई बाकी लोग म्यूट हो अम्बेडकर अब तो जाइए, बच्चे सत्येंद्र होने कुमार लगे। साहब सत्येंद्र कुमार साहब म्यूट। सत्येंद्र जी म्यूट होइए भाई। सत्येंद्र जी जरा बच्चे को माइक से दूर कर दीजिए। हाँ, बच्चे को नानी के पास भेज दीजिए, दादी के हाँ पास सर। भेज दीजिए। तो हम उस तरफ शुरुआत करें। देयर हैज टू बी अ बिगिनिंग। अभी आप शुरू में उनसे पैसा मत मांगिए अपने अलुमनाई से। देखिए मैंने 3 T's की बात की, टैलेंट, टाइम, ट्रेजर। आप उनसे कहिए कि तुम अपना टैलेंट दे दो, अपना टाइम दे दो, अभी ट्रेजर की बात ही मत कीजिए। आपको मालूम होगा जब चाय शुरू में आई थी तो फ्री पिलाई गई थी लोगों को, है ना। फिर अब जी सर। धीरे धीरे हम लोग एडिक्शन हो गया चाय पीने का, है ना। 1.5 घंटा गुजर जाने के बाद अब साहब को ईगर के चाय मिले 1 कप। तो ऐसे ही शुरू में उनको एडिक्शन लाइए, उनको बुलाइए, उनसे कहिए कि आप आइए और अगर आप हमारे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आएंगे वो, डेफिनेटली आएंगे, अल्मा मेटर आना चाहेंगे वो। आप उनको थोड़ी इज्जत देंगे, थोड़ा उनको एक्स्ट्रा, जैसे मैंने बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें, आप उनके लिए जीमेल से फ्री ईमेल लेकर उनको एक ईमेल एड्रेस दे दीजिए लाइफ लॉन्ग अपने कॉलेज के उससे डोमेन से, है ना। बर्थडे विश उनको भेज दीजिए। आप 1 बार भेजेंगे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, 2 बार भेजेंगे नहीं करेंगे, तीसरी बार रिस्पॉन्ड करेंगे। छोटी छोटी देखिए, हर स्टेप छत पे एकदम नहीं पहुंचा जाएगा। आप स्टेप्स लेंगे तो आप छत पे भी पहुंचेंगे एक दिन, ठीक है ना। हायर बात तभी की जाती है कि हमें वहां पहुंचना है एक दिन। क्या स्मॉलर स्टेप्स हैं वो आप डिसाइड करेंगे, क्या स्मॉलर स्टेप्स आपको लेने हैं, ठीक है। तो डोंट लूज। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम बताइए। सर। वालेकुम सलाम जी। सर बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा, बहुत बहुत शुक्रिया सर। काइंडली जी सर इसको शेयर कर दीजिएगा, हम लोगों के लिए फ्यूचर में काम आएगा ये। हाँ, इसकी स्लाइड मैंने और शेयर कर ली है मजहर साहब से, वो आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। ओके सर, एक मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है जी सर, बताइए। कहीं का भी एलुमनाई होने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या होगा? देखिए वहाँ वहां का से थोड़ी कोई डिग्री लेनी होनी चाहिए, वहां सर्टिफिकेट से डिग्री कोई अगर डिग्री है ली सर? होगी। हाँ, हम एलुमनाई हो गए सर एएमयू के हम लोग। नहीं आपके पास कोई डिग्री नहीं ले रहे हैं ना आप, तो इसलिए आप नहीं सर हैं। क्वेश्चन पूछने आप का सिर्फ रीजन यही कोर्स है। कर रहे हैं। अच्छा। आप कोई ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी कोई डिग्री लें तभी अलुमनाई माने जाएंगे। सर सर हम भी कुछ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट देंगे डिप्लोमा, सर। एडवांस डिप्लोमा, डेट? अब ये तो खैर यूनिवर्सिटी को डिपेंड करता है कि 1 साल का डिप्लोमा मान लेंगे नहीं मानेंगे, 6 महीने का मान लेंगे नहीं मान लेंगे, तो इस तरह से यूनिवर्सिटी में डिसाइड, ठीक है। हमने अपने यहाँ थैंक एक यू रूल सर। बना हुआ है कि अगर आपके पास इनरोलमेंट नंबर है तो आप अलुमनाई हैं, ठीक है। ये एलुमनाई राइट। को सर हिंदी में क्या कहते हैं, कोई बताएगा यहाँ पे? पुरातन भूतपूर्व छात्र। छात्र, पूर्ववर्ती छात्र, भूतपूर्व छात्र, हाँ। पूर्ववर्ती छात्र होता है। ये एक शब्द नाम नहीं हुआ ना, तो मजा नहीं आया इसमें। तो बताइए कुछ। नहीं, कोई अच्छा सा वर्ड है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, कुछ बनाइए शब्द। छात्र सर, सही। इसमें डोनेशन देने से कुछ टैक्स बेनिफिट, टैक्स रिलेटेड काला धन। रिलैक्सेशन है? नहीं, हमने तो अपने यहाँ कर रखा है, एएमयू में तो कर रखा है हमने। एटीजी का हम बेनिफिट देते हैं जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, सर ईडी वाले देखिए को नहीं आपके यहाँ? एंडाउमेंट में बहुत लोग देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एंडाउमेंट में जो पैसा होता है ना वो ऐसा है जैसा फाउंडेशन में चला गया, दिखता नहीं है लेकिन उसी के ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। हर कोई जो पैसा देना चाहता है वो चाहता है मेरे नाम की बिल्डिंग बने, मेरे नाम का क्लासरूम बने, मेरे नाम के इक्विपमेंट आए, दिखे लोगों को। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो पैसा बुनियाद में डालना चाहते हैं, फाउंडेशन में डालना चाहते हैं। तो एंडाउमेंट का पैसा मुश्किल से आता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। या तो आदमी अगर मरने लगता है, उसके कोई बच्चे नहीं होते तो दे जाता है उसमें डाल लेना, तो मैं तो मर जाऊंगा, मुझे तो नाम चाहिए नहीं है भाई, तब आदमी डाल जाता है पैसा। सवाब सर जारिया करके। मैं कुछ कहूँ सर? जी जी बताइए। सर ये सब जो है एलुमनाई एसोसिएशन, ये सब एक्चुअली वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज का अप्रोच है, जहाँ टोटली प्राइवेट फंडेड यूनिवर्सिटीज होते हैं मोस्टली, क्योंकि वहाँ हैवी फीस है और गवर्नमेंट बहुत कम एड देती है। अब भारत जैसे देश में
हाँ, जो वेलफेयर स्टेट की बात करता है, हम्म। वहां कहाँ सब कितना कितना हद तक संभव है कि ठीक उसी का हम कॉपी करें? कि अब सरकार भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोली है कि आप अपने स्तर से फंड रेज कीजिए, जी जिसका एक बहुत बड़ा पोर्शन है ये एलुमनाई एसोसिएशन जी जी जी। या और स्टेक होल्डर्स इंस्टीट्यूशन का। तो हम्म। सर कहाँ तक खत्म कीजिए ये अमित सर, मुझे हो गया। मतलब एक समझिए एक पर्सनल क्वेश्चन है कि हाँ, नहीं कहाँ देखिए तक ये उचित है सर? इसकी प्राइवेट फंडिंग गवर्नमेंट फंडिंग से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए कि आप देखिए आईआईटी सारे गवर्नमेंट फंडेड है, लेकिन आईआईटीज के एलुमनाई बहुत हैंडसमली कंट्रीब्यूट करते हैं। अभी अभी कोई न्यूज थी, किसी आईआईटी को बहुत कई करोड़ रुपए दिए उन्होंने, है ना, और देते रहते हैं आईआईटीज में एलुमनाई देते आईआईटी रहते हैं। बॉम्बे को सर 350 मिलियन। हाँ देखिए, तो अब ये गवर्नमेंट फंडिंग प्राइवेट फंडिंग की बात नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपके एलुमनाई कितने वेल ऑफ हैं, कितना आपने उनको आगे बढ़ाया, पढ़ाने के बाद वो कितना आगे चले गए, तो दे कम बैक एंड दे पे बैक, है ना। आइडिया वेस्टर्न वर्ल्ड से, लेकिन देखिए अच्छाई जो होती है ना, खूबी एक दूसरे से लेनी देनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कहाँ से आई है। अच्छी क्वालिटी कहीं से भी आए उसको एक्वायर करना चाहिए, उसको इम्बाइब करना चाहिए। नहीं सर, एक्चुअली नेक के हिसाब से देखें तो हम लोग को फोर्स किया जा रहा है कि आप रेज कीजिए। हाँ, ये नहीं है कि मतलब कि उसमें पॉइंट्स है, पॉइंट्स का मतलब कि हम फोर्स्ड है, कंपेल्ड है कि नहीं हमको अब रेज करना है एनी हाउ। हाँ, जी सर, नैक में तो मेरे कंपल्सरी। कहने का ये मतलब था कि हम जब वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे हैं जी 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 जी। तो वहाँ ये कहाँ से आ गई कि हम लोग को वहाँ उसके लिए मार्क्स मिलेगा उस पर कि कितना फंड रेज हुआ? हाँ। इसके संबंध में कुछ पूछ रहा था। हाँ नहीं ठीक है, ठीक है, आपकी बात, आपका डाउट जेन्युइन है, आई एग्री ऑन दैट। लेकिन ये कि भाई कहीं ना कहीं तो बिगिनिंग करनी होगी ना, शुरुआत तो करनी होगी, एक स्टेप तो लेना ही होगा। बहुत सी जगहों पे लोगों ने स्कीम बना रखी है कि भाई अलुमनाई जो है वो 10 रुपए, या 10 तो नहीं, अब 100 रुपए हर महीने दें, या आप कहिए 10 रुपए हर महीने दें, तो आसान हो जाएगा। लोग कुछ ना कुछ पे करेंगे, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, सब नहीं करेंगे कुछ करेंगे। तो इस तरह से सोचिए, तरीके सोचिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर इंटरेक्टिंग। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। टैक्स एग्जेम्पशन भी है, अपने अपने इंस्टीट्यूशन को डोनेट करिए। हम लोग इतना टैक्स देते हैं। नए वाले टैक्स रिजिम में तो नहीं है। हाँ, न्यू नए वाले टैक्स टैक्स रिजीम में रिजिम नहीं में तो है। नहीं हाँ, है। न्यू में नहीं है। मैं और सर ओल्ड जो में आपने कहा कि ये वेस्टर्न आइडिया है, वेस्टर्न आइडिया नहीं है सर। जो पुराने हमारे यूनिवर्सिटीज थे ना, उनके टाइम पे मौर्यन के हाँ। पहले जो भी थे, वो लोग कांटेक्ट करते थे, वो लोग उनका बना, वो दूर दूर से कहाँ से आते थे, क्योंकि एलुमनाई जाते थे, बातें होती थी, तभी तो और ये जो प्रचार प्रसार के ये लिए वो जो अपने मुझे एलुमनाई बताइए, को आप भेजते सीधा थे। बोल दिया कि हमारा ये आइडिया है। ये भारत में एक नहीं वैसी हमारा नहीं है, परंपरा चली हमारा आ नहीं है, रही है हमारा नहीं है। मैं ओरिजिन नहीं बता रहा हूँ, मैं ओरिजिन नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ इंडिया कि में ये भी कहना भी एक तरीके यूनिवर्सिटीज से का वो जो है कि कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, वो तो वेस्टर्न का ही है, तो नहीं कुछ भी नहीं, होगा तो इंडिया वेस्टर्न का होगा। में पुराने जमाने में नहीं, कैसे राजा वेस्टर्न का हो महाराजा गया? जहाँ से पढ़ते थे वो अपने कोई भी गुरुकुल को। शिक्षण संस्थान पहले तो राजाओं के द्वारा ही पोषित होता था, तो गुरुकुल में देते थे ना वो लोग अपने अपने जहाँ से तो पढ़ उनके के लिए आते। जमीन दे देते थे, वो 1000 सिर्फ एकड़ 10,000 एकड़ हाँ दे देते दान थे। देते थे, हाँ दान देते थे वो लोग। तो हम लोग तो राजा महाराजा है नहीं, वेलफेयर स्टेट की बात है ना यहाँ। अब नहीं है जी बात इंडिया बिल्कुल वेलफेयर है, स्टेट। लेकिन नैक में ना, नैक में वो कम चाहते हो हैं कि गया। क्या कॉलेज एलुमनाई से जुड़ा है, क्या कॉलेज और अरे तो एलुमनाई के बीच में मार्क्स कोई दे रहे संबंध हैं, है? बिल्कुल, उसको मार्क्स जी देने बिल्कुल का मतलब बिल्कुल है कि आपको बिल्कुल बिल्कुल। फोर्स किया जा रहा है। मांगते हैं कि रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं एलुमनाई देखिए, वाला, और वो हाँ वो सब चीजें जानना जरूरी है कि आप जुड़े हैं कि नहीं, आपके यहाँ एलुमनाई मीट होता है कि नहीं, एलुमनाई आते हैं आपके कॉलेज में कि नहीं, ऐसी बात नहीं, फंडिंग पर भी सर पैसा है देखिए। कि उनका बैंक अकाउंट मुझे अलग है कि जहां तक नहीं याद है है, एसोसिएशन का। हाँ नहीं, हाँ और राइट राइट, कितना 4 फंड पॉइंट मिला होता है शायद उसी में से, देना है। कलेक्टिव ऐसा कुछ रहता है। अकाउंट होना भी चाहिए। तो जैसे आप सोचिए ना, अगर अब वाले ये कॉलेज अच्छा है तो एलुमनाई उससे जुड़ना पसंद करते हैं, अगर कॉलेज नहीं अच्छा है तो एलुमनाई उससे कतराते हैं, कहीं ना कहीं ये भी तो अब सही है। सर आप और आप हैं। अब मैं बोल रहा हूँ, आप जो A++ यूनिवर्सिटीज हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, IITs हैं, IIMs हैं, या AMU राइट राइट, BHU JNU TU है, हाँ उनमें डाइवर्सिफिकेशन है उनके कोर्सेज में।
वहाँ आपको इंजीनियरिंग से लेके और कोर सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं। हाँ ठीक है, तो उनके एटलीस्ट एलुमनाई वो बहुत फ्री हैं ऊपर कुछ पहुंच भी चुके कोर्स हैं, चुनने के लिए। वो देखिए बिलियनियर सर हैं, आपकी बात, वो डोनेट जी कर आपकी सकते बात हैं। बिल्कुल सुनिए सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए अभी जैसे मैं छोटा सा सर उदाहरण देता हूँ, मैं खुद भी तो आईसर पुणे से मैंने पीएचडी किया, लेकिन मेरा ग्रेजुएशन सिवली कॉलेज आजमगढ़ से है। तो मैं केवल आईसर पुणे का एलुमिनाई नहीं हूँ, सिवली कॉलेज आजमगढ़ का भी हूँ और बीएचयू का भी हूँ। वैसे ही आप में से बहुत से लोग एएमयू से हैं, तो क्या सब लोग एएमयू में थोड़ी चले गए? आप कहीं तो भी हो सकता है बहुत सारे लोग बीएससी किए होंगे किसी कॉलेज से, तो आप एलुमिनाई वहां के भी तो हैं। आज आप एएमयू में, कल को आईआईटी दिल्ली भी चले गए, हो सकता है कल को आप हार्वर्ड भी चले जाएं। तो एलुमिनाई तो उस कॉलेज के भी रहेंगे, अगर आप उस कॉलेज से जुड़े हैं तो। ऐसा नहीं कि कॉलेज से निकल के, ये एग्री करता हूँ कि हमारे, मैं ट्राइबल इलाके में पढ़ाता हूँ, वहां पे भी ये बहुत सारी हालत है कि एलुमिनाई में ढूंढने से नहीं मिलता है कि कोई है जो बता सके कि हाँ ये बहुत अच्छा काम किए हैं या ये कर रहे हैं। ज्यादातर देखिए एलुमिनाई ऐसे। देखिए विनीत सर, आदर्श की बातें करना, पेपर पर बातें करना बहुत अच्छा लगता है। वो लोग जब भी सर मैं दिखाते एग्री हैं करता हूँ। प्रेजेंटेशन में एकदम स्टैंडर्ड का दिखाते हैं। यहाँ रियल ग्राउंड में आकर देखें। रियलिटी है यही है सर वो सर। आईआईटी, सर वो हम लोग आईआईटी में भी होता आईआईटी है, एक में चीज नहीं आपको बता दूं। पढ़ा रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ा रहे हैं।